development of the entire judicial ecosystem of our country. So on the Honorable Supreme Court, on 15th August 2023, during the Independence Day celebrations in the Supreme Court, at that time, the then Chief Justice of India, Justice D.Y. Chandrachud, placed a plan on how we can improve the Supreme Court and the infrastructure. He said the Supreme Court needs 27 additional courtrooms, 51 judges' chambers, 4 registrar courtrooms, 16 registrar chambers, a new Supreme Court Bar Association library, dedicated offices for the Supreme Court Bar Association and SCORA, Supreme Court AOR Association, dedicated lounges for advocates, litigants, and registry expansion. I am very hopeful when the Honorable Minister will reply, will probably provide some succor, some support, some good news about how the government is planning to strengthen our Honorable Supreme Court. So I would like to now come to the bar, the advocates. The Supreme Court Bar Association has stated that there are 234 chambers that are being used by 468 advocates presently. But there is a requirement of 400 to 500 advocate chambers, sir. In this regard, the SCBA in 2023 had approached the Supreme Court for a plot of land of 1.33 acres, which is adjoining the Supreme Court. That was, of course, not allowed, but Mani Meghwal ji is here. I'll request the Honorable Minister to kindly intervene and find out how the Supreme Court Bar Association and their request for more chambers for the Supreme Court advocates can be provided. So we talked about infrastructure. I have about, say, a very little time. I will only conclude. How much of time? I have about 24 seconds. Right. Since there is a walkout, I'll just take a privilege of another 1 minute, if you do not mind. Today, Parliament is not merely increasing the strength of the Supreme Court. It's renewing its faith in one of the greatest constitutional institutions of the Republic. The Constituent Assembly gave us the Constitution. Successive generations of Supreme Court gave meaning to this text. Through Articles 32, the Supreme Court became the sentinel of fundamental rights. Through Articles 141 and 142, it transformed constitutional principles into binding law and made complete justice the defining promise of our democracy. When the story of independent India will be written, Supreme Court will shine. I'll just take 10 seconds and I'll conclude. The world's largest democracy deserves nothing less. History will record the Parliament strengthened the Republic, for when the Supreme Court stands strong, the Constitution stands secure, and when the Constitution stands secure, India stands protected. With these words, I support the bill. Thank you, sir. Manya S. Niranjan Reddy. Manya S. Niranjan. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, I rise to support the bill, but I wish we had provided for an increase beyond the number of 4. Sir, a few statistics, since the Honorable Law Minister is also here. Sir, 1956, when the Act was made, Supreme Court had a strength of 11 judges. The filing used to be 2,362 cases per year. Honorable Law Minister, sir. Yes, Honorable Law Minister is addressing you. I just wanted the Honorable Law Minister's attention. Yes. Sir, 1956, when Supreme Court had a strength of 11 judges, we had 2,362 cases being filed every year. And sir, you will be surprised to note it was 214 cases per judge. 1986, number of cases per judge increases to 1,072. 2019, sir, when we last increased it to 34th, the number of cases per judge was 1,282 filed every year. Sir, 2025 statistics show that when we had 34 judges with 75,000 cases being filed, the number of cases being filed per each judge is 2,218 cases. Sir, since the Supreme Court sits in division benches of 2 judges, this translates to nearly 4,500 cases per each judge per year. We have increased, sir, from 214 per judge to 2,200 in 2026. Sir, 4 may not be the solution. This may only be a band-aid, but this will not be a complete solution. Sir, we need systemic changes.
since I have only 1 minute left, sir, I am suggesting 3 things for the Honorable Law Minister to consider. First, anything comes to Supreme Court. Sir, if I fight with my neighbor about who owns this pen, it goes up to Supreme Court. Sir, please provide for appellate courts. Civil jurisdiction, criminal jurisdiction from the high courts can go up to an appellate bench. The appellate bench can comprise the senior most high court judges, 3, 5, 7, they can deal with that, it will take the load off. So criminal matters, suggestion number 2. Sir, in criminal matters, every bail matter, every quash matter goes before a single judge. Next matter comes before Supreme Court. In civil cases, sir, we have an appeal from a single judge to a division bench. One amendment in CRPC, we can provide for an appeal in relation to a bail, anticipatory bail, quash to a division bench. It will take off 15% load on Supreme Court. Third suggestion, sir, please enact a compulsory costs act. World over, people get scared to file a case when they understand if they file a false case, then they will be imposed heavy costs. In India, I know that I can file a case without costs and I will be able to clog the judicial system. Sir, 15 seconds. Sir, please plan ahead. Now we have 4 judges appointed. I am seeing in the Supreme Court 2 courtrooms being readied today. Please plan 10 years ahead. Arjun Ramji, sir, is a lawyer. I am sure he will be able to do this. Sir, infrastructure, digital. Sir, last point. We have a provision in the Constitution, sir, to have additional benches. My request to the Honorable Law Minister is, please consider having a Supreme Court bench in the south, preferably in Hyderabad because it is centrally located. Thank you. Thank you. Thank you, sir. माननीय I.S. इनबा दुरई. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. I rise to support the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 on behalf of the ADMK. I wholeheartedly welcome this important legislation. As on 1st January 2026, the Supreme Court has had around 92,000 pending cases. During the year 2025, 75,000 fresh cases were instituted, while only 65,000 cases were disposed of. These figures clearly demonstrate the growing pressure on the Supreme Court. Therefore, increasing the sanctions to 38 judges, including the Honorable Chief Justice of India, is timely and necessary reform. Sir, I come from Tamil Nadu, a land with a glorious tradition of justice. The history of Pandya King Neduncheliyan and Manunidhi Cholan remind us that justice must always be fair, impartial and timely. There is a well-known principle, justice delayed is justice denied. Delay in justice affects the lives of ordinary citizens. A farmer awaiting compensation, a worker seeking wages, a senior citizen waiting for pension, a woman seeking justice, and an under trial awaiting a fair hearing. Strengthening the judiciary is therefore an investment in democracy and the rule of law. Sir, this is very important thing. I have seen first-hand the tremendous workload handled by our judges. They hear hundreds of matters every day while ensuring that every case receives careful consideration. Such an enormous workload inevitably affects the speed of justice in the land. Increasing judicial strength is essential to reduce this burden without compromising the quality of judgments. Sir, I come from the Madras High Court Bar. Being an advocate, I have the privilege of being a member of the Madras High Court Bar Advocates Association. The Madras High Court, one of the oldest high court in the country, has more than 5.53 lakh cases said to be pending now. Against a sanction strength of 75 judges, only 52 judges are in position. I urge the government to fill the existing vacancies like Supreme Court and increase the sanctioned strength from 75 to 100 judges to improve access to justice for the people of Tamil Nadu. I am really appreciating the government as well as the law minister for the bringing this important legislation. With these words, the ADMK under the leadership of
our leader, Please, Mr. M. conclude. Edappadi K. Palaniswamy, extend his full support to this bill and also urging Thank the you. government, union government, Thank to you. take necessary steps to create a bench, Supreme Court bench in Madras also. you. Thank you. This is fine. Thank you, sir. Thank you, sir. माननीय श्री राजेंद्र हीरालाल जैन। माननीय उपसभापति महोदय, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 के समर्थन में मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं कि जिसकी वजह से मुझे आज बोलने का मौका मिला। आज सरकार ने ये जो बिल, ये संशोधन बिल यहाँ पर प्रस्तुत किया है, ये किसी दल या किसी पक्ष में नहीं, बल्कि उस आम भारतीय पक्ष में बोल रहा हूं जिसके लिए न्याय केवल एक कानूनी शब्द नहीं बल्कि जीवन का सहारा है। देश का गरीब आदमी अदालत इसलिए नहीं जाता कि उसे मुकदमे लड़ने का शौक है, वह तब जाता है तब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। लेकिन जब व्यक्ति वर्षों वर्षों तक न्याय का इंतजार करता है तो केवल एक मुकदमा लंबित नहीं रहता, उसकी उम्मीद, उसकी कमाई और उसका भविष्य भी लंबित हो जाता है। कहा जाता है कि न्याय में विलंब न्याय से वंचित करना है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की क्षमता बढ़ाना कोई प्रशासनिक औपचारिकता नहीं बल्कि करोड़ों नागरिकों के संवैधानिक अधिकार को मजबूत करने का कदम है। सरकार ये जो विधेयक लाई है, इस विधेयक में मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव है ताकि लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आ सके। आज हमारी संस्कृति कहती है न्यायो धर्मस्य मूल्य, न्याय ही लोकतंत्र की आत्मा है। आज हमारी सरकार ये न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा रही है। इसमें आज सभी लोगों ने आंकड़े दिए, हजारों मुकदमे प्रलंबित हैं। इन मुकदमों की वजह से जो परेशान होते हैं वो किसान परेशान होता है, जिसका जमीन विवाद का मामला अटका है वो महिला परेशान होती है, जो अपने अधिकारों के लिए अदालत में चक्कर लगा रही है वो युवा जिसकी नौकरी या भविष्य का फैसला मुकदमे में अटका है, वह गरीब परिवार जो हर तारीख पर अपनी मेहनत की कमाई खर्च करता है। न्याय में देरी केवल अदालत का बोझ नहीं बढ़ाती बल्कि गरीब की जेब खाली करती है और लोकतंत्र में उसका विश्वास भी कमजोर करती है। यह विधेयक न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का विधेयक नहीं है, यह जनता के विश्वास को बढ़ाने का विधेयक है। माननीय उपसभापति महोदय, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर मामलों का अत्यधिक बोझ हो तब केवल इच्छा शक्ति पर्याप्त नहीं होती, संस्थागत क्षमता भी आवश्यक होती है। यह विधेयक उसी क्षमता को मजबूत करता है, इसलिए संवैधानिक पीठों का नियमित गठन संभव होगा और महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों का समय पर निर्णय हो सकेगा। सामान्य अपीलों की प्रलंबित मामलों को भी न्याय मिलेगा। इस विधेयक के माध्यम से हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की न्यायाधीशों को बढ़ाने की जरूरत है, आज 33 से 37 करने का जो प्रस्ताव इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने रखी है, ये सरकार मैं अंत में यही कहना चाहता हूं, इस देश का सबसे बड़ा न्याय वही होगा जब गरीब को न्याय पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी अदालत की दहलीज पर न बितानी पड़े। मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद। माननीय श्री विजय चिंता कायला जी। धन्यवाद महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है यतो धर्मा ततो जयः, where is dharma there is victory. I rise today on behalf of the Telugu-Desam Party to extend my wholehearted support to the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill to 2026 Mahoday, my heartfelt gratitude to Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, under whose leadership judicial reforms has been treated as a continuous citizen-centric mission. From the e-courts mission mode project to the fast-track special courts, and today this landmark bill. I would like also to thank Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Chandrababu Naidu ji, for his contribution to building judicial infrastructure at Andhra Pradesh, notably the interim judicial complex at Amravati. I congratulate our Honorable Prime Minister and Arjun Ram Meghwal ji and NDA government for bringing this paramount legislation to the floor. Our country has grown from roughly 36 crore citizens at the dawn of the Republic to over 150 crore
today, Mahoday. As India ascends globally, our judicial infrastructure must keep pace. A Vikasit Bharat demands a robust, efficient, and easily accessible legal ecosystem. Sir, our constitution begins with a solemn promise: justice, social, economic, and political. Judges are the ultimate custodians of our constitution and the sentinels of our fundamental rights, Mahoday. Increasing the sanctioned strength of Supreme Court judges from 33 to 37, excluding the Chief Justice of India, is a commendable and timely reform, Mahoday. But, sir, this is not merely an amendment to a numerical figure. Behind every pending case, there is a human story: a farmer waiting for the land dispute to settle, and a woman seeking her rightful inheritance, or a family desperately praying for closure. Justice delayed is justice denied, what we always say, Mahoday. Our jurisprudence rests on the bedrock principle that it is better that 100 guilty persons escape than one innocent person suffer. Mahoday, the law is equal for all, whether powerful or common citizen. So I illustrate my strengthening judicial capacity, especially in special CBI courts, is critical. I wish to present a clear case study. उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ जो 2013 से लगभग इतिहास क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, यानी लगभग 13 साल हो गए। अब तक लगभग अलग अलग इन डिस्चार्ज पिटीशन की सुनवाई, लेकिन 5 बार होने वाले ट्रांसफर और जजेस की वजह से आज तक पूरी नहीं हो पाई। अगर सिर्फ डिस्चार्ज पिटीशन में ही चिंता कर रहे हैं, प्लीज नो, आई एम कॉलिंग अदर पर्सन, नो, you have to stick to the bills. माननीय श्री संजय when will we please speak to the point only, speak on the bill only. पर चिंता लोगों का भरोसा, yes, speak. सिस्टम पर लोगों का भरोसा तभी रहेगा जब इंसाफ वक्त पर मिलेगा, महोदय। Sir, judicial strength must not be limited to the apex court alone. धन्यवाद। We must just one. धन्यवाद। I'll conclude. Complete. I'll not conclude. We must simultaneously empower high courts, special CBI courts, and subordinate courts, Mahoday. And I wish also to record the vision of our Honorable Chief Minister toward building world-class legal infrastructure. माननीय श्री संजय सिंह, माननीय श्री संजय सिंह। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, जिस तरह से देश में अपराधों की संख्या बढ़ रही है, हत्या, लूट, बलात्कार, जमीनों पे कब्जा करने की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसी प्रकार से जजों की भी संख्या बढ़नी चाहिए और कोर्ट्स की भी संख्या बढ़नी चाहिए, कोर्ट रूम की हालत भी सुधरनी चाहिए। उस दिशा में ये एक अच्छी पहल है सरकार की ओर से। लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि देश के जिला न्यायालयों में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, 5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। देश के हाई कोर्ट्स के अंदर 60 से 65 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 96,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। क्या उसके हिसाब से आपके पास जजेज की संख्या पर्याप्त है? क्या उसके हिसाब से आपके पास कोर्ट्स की संख्या पर्याप्त है? अगर हिंदुस्तान की बात हम लोग करें मान्यवर, तो हिंदुस्तान में 10 लाख की आबादी पर एक जज है। विधि आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से, और बार बार आपसे अनुरोध किया गया है कि 10 लाख की आबादी पर कम से कम 50 जजों की नियुक्ति आप कीजिए। निश्चित रूप से आप 33 की संख्या बढ़ाकर 37 सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आपको कोर्ट्स की भी संख्या देश में बढ़ानी पड़ेगी। और जो आज आबादी के मुताबिक जजों की संख्या है, हर स्तर पे उसको भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह सरकार से पूछना चाहता हूं, कांसीराम जी का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आज मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में कितने पिछड़े समाज से हैं, कितने दलित समाज से हैं, कितने आदिवासी समाज से हैं, कितने समाज के वंचित तबके से आते हैं? नहीं मान्यवर, उनकी भागीदारी बिल्कुल शून्य है। इसलिए न्याय अगर आप करना चाहते हैं, आज न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, पत्रकारिता हो, सब में बराबर का प्रतिनिधित्व समाज के वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, आदिवासी तबके को देना होगा। इसके साथ साथ मैं अनुरोध यह भी सरकार से करना चाहता हूं, न्याय की स्थापना तब होती है जब ऊपर से लेकर नीचे तक
न्याय करता हुआ दिखे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, 15 साल की बच्ची से प्रधानमंत्री लड़ेंगे तो कैसे न्याय होगा? सर, मुझे अपनी बात खत्म करनी है, मेरा समय बचा है, समय बचा है, मैं कह रहा हूं, आप बोलिए, पर बिल पर खत्म कर रहा हूं, बिल पे ही बोल रहा हूं सर, बिल पे ही बोल रहा हूं, इतनी देर तक बिल पे बोला। सर, मेरा अनुरोध ये है कि सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक न्याय करती हुई दिखे। 15 साल की बच्ची से दुर्भाग्यपूर्ण है। 15 साल की बच्ची को 15 साल की बच्ची को कैसे? धन्यवाद माननीय सदस्यगण, आपको मालूम है, प्लीज बोल। संजय सिंह जी पहली बार किसी गवर्नमेंट बिल को समर्थन दिया है और अच्छा पहल है बोला है, अच्छा लगा। प्लीज, झूठ सब असंसदीय है, झूठ असंसदीय है। संजय जी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, उन्हें बोलने दीजिए। मैंने आपको तारीफ इसलिए किया क्योंकि आपने बिल को अच्छा पहल बोला। दूसरी बात, उन्होंने SC ST रिजर्वेशन जुडिशरी में बताया, ये अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन सरकार जरूर करते हैं, नाम तय तो कॉलेजम करते हैं, वहां SC ST का नाम अगर कॉलेजम नहीं भेजेंगे, सरकार अपने आप से नाम ढूंढ करके अपॉइंट कर नहीं सकता है। इसलिए कहीं गलत मैसेज ना जाए कि सरकार SC ST का अनदेखा किया गया है, गलत मैसेज ना जाए, इसलिए मैं स्पष्टीकरण करने के लिए खड़ा हुआ। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, प्लीज नो प्लीज। माननीय सदस्यगण, मेरा आप सबसे निवेदन है, एक मिनट, मेरा आप दोनों बैठ जाए, इट इज नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। नो, नहीं, माननीय सदस्यगण, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के बारे में कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो सब्सटेंसी मोशन लाना चाहते हैं। अब ये रूल से अवेयर होते हुए भी आप ऐसा करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। प्लीज, माननीय श्री संजय यादव महोदय। सर, निसंदेह जो देश की हमारी आबादी बढ़ी है और जो केसों की भी संख्या बढ़ी है, उसके अनुरूप में जजों की संख्या हर स्तर पे बढ़नी चाहिए। लेकिन जजों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए सर एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन होना चाहिए, क्योंकि इस देश में एक चपरासी का चयन भी एग्जाम देकर होता है, लेकिन उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति होती है वो बिना किसी एग्जाम सिस्टम के होती है, और जैसा माननीय मंत्री जी किरण रिजिजू जी ने बोला कि कॉलेजियम सिस्टम से होती है। उस जजों की हमारी मांग है कि जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। महोदय, इस देश की जनता को जानने का अधिकार है कि अगर उच्च न्यायालय के किसी जज की नियुक्ति हुई है तो वो किस आधार पे हुई है, और उनकी नियुक्ति के जो कारण और आधार हैं वो स्पष्ट रूप से सार्वजनिक किए जाने चाहिए देश को, कि ताकि देश की जनता को भी पता चले कि अमुक जज की अगर नियुक्ति हुई है तो इन आधार पे हुई है महोदय। और एक हमारी मांग है, जैसा कि सब कोई जानते हैं, इस देश की 85% आबादी SC ST और OBC की है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे देश में इन वर्गों की, वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, उपहासित और बहिष्कृत समुदायों के जो लोग हैं वो न्यायपालिका में, उनकी उच्च न्यायपालिका में 1% भी भागीदारी नहीं है, 1% भी। ये हमारे लिए एक सामूहिक चिंतन का विषय है अगर हम न्यायपालिका में सुधार और जजों की संख्या बढ़ाने पे भी बात कर रहे हैं तो महोदय, जिनका जुडिशरी में प्रभाव है वो किसी मेरिट के आधार पे नहीं, वो कुछ चुनिंदा विशेष श्रेष्ठता, जातीय प्रभुत्ता और भाई भतीजावाद के दम पर उनकी नियुक्ति होती है। क्योंकि मैं फिर दोहरा रहा हूं कि वो कोई परीक्षा देकर उच्च न्यायालय में जज नहीं बनते हैं, वो जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कॉलेजियम सिस्टम की उपज है, और कॉलेजियम सिस्टम में कौन लोग बैठे हैं उसमें हमारा आपका भी कोई से नहीं है, इस पार्लियामेंट का भी से नहीं है। क्यों नहीं है, उस पर भी एक व्यापक विमर्श होना चाहिए महोदय। इसलिए हमारी मांग है कि इस कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करना चाहिए, ध्वस्त कर देना चाहिए, और न्यायपालिका में, उच्च न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए। और महोदय, एक और जो हमारा गंभीर विषय है, अक्सर बहुत सारे मामलों में जज खुद को कई मामलों की सुनवाई से हटा लेते हैं, रिक्यूज कर लेते हैं, लेकिन उस रिक्यूजल का कारण सार्वजनिक नहीं होता है। महोदय, अगर कोई माननीय जज
किसी केस से स्वयं को हटाते हैं, तो माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से ये हमारी मांग है, माननीय विधि मंत्री जी भी हैं, कि ये प्रावधान होना चाहिए कि अमुक जज ने अगर किसी मामले से सुनवाई से स्वयं को हटाया है तो कौन कौन से कारण है वो सार्वजनिक होने चाहिए और देश की जनता को ये जानने का अधिकार है कि मैं इस केस से क्यों हटा हूं। और महोदय, जैसा कि हमने कहा, जितने भी अगर जजेस उच्च न्यायपालिका में आरक्षण नहीं होता है तो उसका भुगतभोगी वंचित उपेक्षित समुदाय भी होता है। तो हम संसद में ये बात कर रहे हैं, ये हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है कि हम जजों की संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें वंचित उपेक्षित वर्गों के जजों की भी संख्या बढ़नी चाहिए। थैंक यू। माननीय श्री रविचंद्र वद्दी राजू जी। सर, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल को हमारा पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं सर। तेलुगु में बात कर रहा हूँ सर। ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టులో ఉన్న కేసుల సంఖ్య 92,000 పైగా ఉంది. కేసుల భారం పెరుగుతున్న సమయంలో జడ్జీల సంఖ్య 34 నుంచి 38కి పెంచడం, అంటే 33 నుంచి 37కు పెంచడం సార్. దీని నిర్ణయం వల్ల మరిన్ని బెంచెస్ ఏర్పాటు చేయడానికి, ముఖ్యంగా కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచెస్ క్రమం తప్పకుండా నిర్వహించడానికి అవకాశం కలుగుతుంది. అందువల్ల ఈ బిల్లును మేము స్వాగతిస్తున్నాం సార్. సార్, జస్టిస్ డిలేడ్ ఈజ్ జస్టిస్ డినైడ్ అనే సూత్రం మనందరికీ తెలిసిందే. ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టులో 92,000కు పైగా కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. గత సంవత్సరం 2020 సంవత్సరంలో 75,410 కేసులు నమోదు కాగా 65,615 కేసులు మాత్రం సాల్వ్ అయ్యాయండి. అంటే కొత్తగా వస్తున్న కేసుల వేగానికి మన కేసులు పరిష్కారం చేస్తున్న వేగానికి సరిపోవడం లేదు సార్. ఈ పరిస్థితిలో జడ్జెస్ సంఖ్యను పెంచడం తప్పకుండా స్వాగతించాల్సిన నిర్ణయం. దేశవ్యాప్తంగా హైకోర్ట్స్ మరియు డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో ఇప్పటికే అనేక జడ్జెస్ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి సార్. సాధారణ ప్రజలు సంబంధించిన ఎక్కువ కేసులు మొదట డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్, తర్వాత హైకోర్టు నుంచే వస్తాయి. అక్కడ ఖాళీలు భర్తీ చేయకపోతే చివరికి కేసుల భారం మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టు పైన పడుతుంది. రెండవ సార్, ప్రపంచంలోని ప్రధాన ప్రజాస్వామ్య దేశాలతో పోలిస్తే మన దేశంలో జనాభాకు తగినంత జడ్జెస్ లేరు సార్. దాని మీద ఒకసారి ఆలోచించాలి సార్. అయితే ఈ బిల్లును మరింత ప్రజలకు ఉపయోగపడేలా అత్యంత ముఖ్యమైన అమెండ్మెంట్ ఈ సభ ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని సూచించదలుచుకు మా పార్టీ కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలో ఒక సూచన, విలువైన సూచన సార్. సుప్రీంకోర్టులో జడ్జెస్ సంఖ్యను పెంచడం ఎంత అవసరమో సౌత్ ఇండియా కోసం ఒక పర్మనెంట్ బెంచ్ను ఏర్పాటు చేయడం కూడా అంతే అవసరం సార్. స్వాతంత్రం వచ్చినటి నుంచి ఈ రోజు వరకు సౌత్ ఇండియా నుంచి ప్రతి ముఖ్యమైన కేసు కోసం న్యూఢిల్లీ వరకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది సార్. సాధారణ రైతు, ఉద్యోగి, వ్యాపారి, మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందిన ఇట్లా చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న సార్. ప్రయాణం కానీ, ఖర్చులు కానీ, సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్స్ పొందడం, ఇవన్నీ కలిసి న్యాయం సాధారణ ప్రజలకు మరింత దూరం అవుతుందని మా భావన సార్. జస్టిస్ అందరికి సమానంగా ఉండాలంటే యాక్సెస్ టు జస్టిస్ సమానంగా ఉండాలి సార్. సౌత్ ఇండియా బెంచ్ ఏర్పాటు చేయాలంటే హైదరాబాద్ కంటే అనువైన నగరం దేశంలో మరొకటి లేదు సార్. హైదరాబాద్ భౌగోళికంగా సౌత్ ఇండియా మధ్యలో ఉంది. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళ, పుదుచ్చేరి, లక్షద్వీప్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది సార్. ప్రజలకు సులభంగా చేరుకునే అవకాశం ఉంది సార్. దేశంలోని అత్యంత ముఖ్యమైన డిఫెన్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఇస్రో, ప్రముఖ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఐటీ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, బయోటెక్నాలజీ, ఏరోస్పేస్, నేషనల్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ ఇవన్నీ హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి సాఫ్ట్వేర్ ఇన్నోవేషన్ రీసెర్చ్ సెంటర్, డిజిటల్ ఎకానమీ రంగాల్లో హైదరాబాద్ ఒకటి జాతీయ కేంద్రంగా ఎదిగింది. కాబట్టి ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్లో ఒక బెంచ్, స్పెషల్ బెంచ్ పెడితే బాగుంటుందని చెప్పేసి మా తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష. సౌత్ ఇండియా ప్రజలకు కూడా బాగుంటుందని కోరుకుంటూ సార్, జ్యుడిషియల్ రిఫార్మ్లో హైదరాబాద్ పర్మనెంట్ సౌత్ బెంచ్ ఏర్పాటు చేయాలని కోరుకుంటున్నాం సార్. ఇది చాలా మంచి ఆలోచన అని చెప్పేసి భావిస్తూ తెలంగాణని మాత్రం హైదరాబాద్ని ఖచ్చితంగా చేయాలని చెప్పి మరొక్కసారి మనవి చేసుకుంటూ అర్జున్ రామ్ మేఘవాల్ గారికి సూచించుకుంటూ थैंक यू सर. इस बिल बहुत अच्छा है. जजेस बढ़ाने के लिए भी हमारा पार्टी समर्थन करता है. थैंक यू वेरी मच. सेक्रेटरी जनरल. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 5th August 2026 passed the Bankers Books Evidence Bill 2026. I lay a copy of the said bill on the table. Next speaker, Dr. V. Shivdasan. 2 minutes. Respected Chair, justice denied. The statement is in India, it is one of the true statements still. Crores of cases are pending in our judicial system. High Court, Supreme Court, everywhere the courts are pending. 92,000 cases are pending before our Supreme Court. Sir,
it includes a case against the women, against the student. A lot of cases are there. I'm not going to the details. But sir, if the delayed justice, that means that is a punishment to the students, women and everybody. The government has registered false cases against the students. Yes. False cases against many of innocent people because of the political bias. So, sir, the cases are pending. If they are not getting justice to the court, then that is a punishment. So, sir, the number of courts and the number of judges should be increased. Then the courts are able to manage these cases, and the students and women, they will get the justice through the court. So the cases against the innocent students and the cases against the women, interest of the government, जो भी आपने सब्जेक्ट से अलग हटके बुलाया वो नोट नहीं किया जाएगा. Innocent people आप अपनी बात सुनिए. should be protected, sir. The right of the students. The honorable members are participating in this very important bill. Dr. Shivadasan is a member of CPIM. We expect CPIM and the communist MPs to be more illustrious, more balanced and more matured. But unfortunately, Shivadasan ji, you are not doing justice to yourself by diverting your speech into something else out of the topic of the discussion. Please don't refer to anything else. I request Honorable Chairman sir, he is diverting from the subject, so he may not be allowed to bring some other issues in this discussion. Sir, I like to respond. नहीं, आपके जो विषय इससे अलग है. I like to respond to the Honorable Minister. Sir, I try to address the real issue of the people. Then how the pending cases are affecting the people, affecting the community of the nation. So the number of the judges and number of the courts should be increased. Honorable Sir. चौधरी मोहम्मद रमजान. Honorable Sir, ये एक important bill है इस वक्त यहाँ पर हाउस के सामने, wherein the number of the judges of the Supreme Court has to be increased by this bill. मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी जो है इसके 3 पिलर होते हैं. एक है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी. हर एक इदारे को अपने स्फीयर में काम करना है और किसी को किसी दूसरे के जुरिडिक्शन में एनक्रोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये जो आपने यहाँ पर ये बिल लाई है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस है वो करीबन 97,000 से 4,011 के करीब है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस. इसके साथ साथ ही जो हाई कोर्ट्स में है करोड़ों के हिसाब से, और उसके लोअर कोर्ट्स जो है उधर भी काफ़ी तादाद में ये केसेस पेंडिंग है. तो एक ये पुराना मुहावरा है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड. मैं तो ये समझूंगा कि बेहतर ये होता कि अगर ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर ये बिल लाते कि लोअर कोर्ट्स में, चाहे म्यूनसिपल लेवल पर, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स, चाहे हाई कोर्ट के केसेस, उधर भी उनकी तादाद बढ़ाई जाए ताकि निपटारा हो जाए उन करोड़ों केस का जो इस वक्त वहाँ पर पेंडिंग है. तो लिहाजा इस सूरत में इसमें यही मुझे बात कहनी है. दूसरी बात जो मुझे यहाँ पर कहना चाहूँगा वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई आर्डर देता है तो उसका